भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश के आदरणीय प्रभारी श्री दुष्यंत भाई पटेल जी के मार्गदर्शन में एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश भाई अगरिया जी की उपस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा निम्नलिखित नियुक्तियां की गई है। शिलू भाई पटेल, अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा दमन जिला। ओबीसी मोर्चा दमन जिला कमेटी। किसान मोर्चा दमन जिला कमेटी। अमृत भाई छगन भाई सोलंकी, अध्यक्ष दीव जिला किसान मोर्चा। राजेश गुलाब भाई पटेल, अध्यक्ष दमन जिला किसान मोर्चा। शंकर भाई भीखू भाई पटेल, अध्यक्ष सिलवासा शहर जिला किसान मोर्चा। श्री नरेश भाई जिफर भाई गावित, अध्यक्ष सिलवासा ग्रामीण जिला किसान मोर्चा। विनोद भाई लखमा भाई कौम, अध्यक्ष खानवेल जिला किसान मोर्चा। हितेश कालीदास भाई पटेल, अध्यक्ष घेलवाड़ मंडल दमन जिला। प्रकाश पुना भाई हलपति, अध्यक्ष पटलारा मंडल दमन जिला। दिनेश धोड़ी, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा एसटी मोर्चा दमन जिला। अनुसूचित जनजाति मोर्चा एसटी मोर्चा दमन जिला कमेटी की घोषणा। कविताबेन जगदीश भाई पटेल, महामंत्री दमन जिला भाजपा। आज के इस कार्यक्रम में अन्य उपस्थित महानुभावों में दमन जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत भाई पटेल, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्री हरीश भाई पटेल, प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री उत्तम भाई पटेल सहित बड़ी संख्या में जिला के एवं मंडलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं એવું કહેવા માગું છું કે આપણા પ્રભારી દુષ્યંતભાઈ પટેલ અને આપણા પ્રદેશ અધ્યક્ષ મહેશભાઈ આગેજીની અધ્યક્ષતામાં આજે બી નિર્ણય લીધો અને જેને બી પદ મળ્યું એ અમારા ઓબીસીમાં બધા સમાજના છે, જેમ કે ભંડારી સમાજ હોય, નિતના સમાજ હોય, ટંડે સમાજ હોય, આ ટાઈમ બધા સમાજને એક સાથે લીધા છે એમણે। અને મેં એ જ આશા રાખું છું કે આ જે બી વ્યક્તિ છે એ બધા મતલબ કામ કરે તેવા છે અને એ લોકો પાર્ટી માટે અને મોરચા માટે પોતાનો સમય કાઢીને કામ કરશે અને પાર્ટીને મજબૂત કરશે એવું મને આશા છે અને વિશ્વાસ છે। આજ રોજ દમણ જિલ્લા મોરચાની ટીમને નિયુક્ત કરવામાં આવી, જે ઓબીસી મોરચા જિલ્લા અધ્યક્ષ અને એમની ટીમ અને કિસાન મોરચા અને એમની ટીમ તેમજ એસટી મોરચાની ટીમને આપણા પ્રદેશના પ્રભારી દુષ્યંતભાઈ પટેલજી અને પ્રદેશના અધ્યક્ષ મહેશભાઈ આગેજીના નેતૃત્વમાં આ ટીમને ઘોષણા કરવામાં આવી।